गंगा सेवा दूत बहुत ही अथक परिश्रम से आग पर काबू पाए हैं। अवनीश मिश्रा, प्रयागराज, महा। तो यहाँ पर जो वहां चश्मदीद है वो ये बता रहे हैं कि आग को अब काबू कर लिया गया है और किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो वहां शामियाना लगा हुआ था, जो पंडाल लगा हुआ था, वो जल करके खाक हो गया है। हालांकि वहां चश्मदीद ये भी बताते हुए सुनाई पड़े हैं, आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है, कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअल्टी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, प्लीज। सब चीजें कंट्रोल में है, आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है, कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअल्टी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, प्लीज। सब चीजें कंट्रोल में है, आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, प्लीज। सब चीजें कंट्रोल में है, आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है, कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअल्टी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, प्लीज। सब चीजें कंट्रोल में है, आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है, कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअल्टी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है, कृपया। और मोहम्मद गुफरान हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुफरान, यहाँ पर प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है कि कोई इंजरी नहीं हुई है, किसी तरह की कैजुअल्टी नहीं हुई है और अब यहाँ आग काबू में कर ली गई है। ये राहत भरी खबर। हाँ बिल्कुल, देखिए आग जो है वो काबू में है, काबू कर ली गई है, पूरी तरीके से आग को बुझाया जा चुका है। लेकिन और बड़ी खबर आ रही है, प्रयागराज महाकुंभ में फिर से आग लगी है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, सेक्टर यमुनापुरम में आग लगी है। बड़ी खबर आ रही है, प्रयागराज महाकुंभ से फिर से आग लगने की एक घटना प्रयागराज महाकुंभ में हुई है। बड़ी खबर आ रही है, सेक्टर यमुनापुरम में यह आग लगी है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आग बुझाने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। आग लगने की घटना प्रयागराज महाकुंभ में सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपको हम प्रयागराज से दिखा रहे हैं, महाकुंभ में, जहां पर सेक्टर यमुनापुरम में आग लगी है और यहां पर प्रशासन के अधिकारी, दमकल की टीम यहां पहुंचती हुई आग बुझाने की कवायद करती हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से प्रयागराज महाकुंभ में जो फिर से आग लगी है उसको बुझाने की कवायद की जा रही है। बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां महाकुंभ में एक बार फिर से आग लगने की घटना हुई है। यमुनापुरम सेक्टर में ये आग लगी है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रयागराज महाकुंभ में कुछ दिनों पहले भी आग लगने की घटनाएं हुई हैं और एक बार फिर से यहां पर आग लगी है। सेक्टर यमुनापुरम में ये आग लगी है, बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रयागराज महाकुंभ में फिर आग लगने की घटना हुई है। आग से कितना नुकसान हुआ है यह भी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद, दमकल की टीमें आग बुझाने में लगातार लगी हुई हैं। सेक्टर यमुनापुरम में आग लगने की यह घटना हुई है। प्रयागराज महाकुंभ, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इन सबके बीच आग लगने की एक और घटना यमुनापुरम सेक्टर में सामने आई है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। तो प्रयागराज महाकुंभ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सेक्टर यमुनापुरम में आग लगने की ये घटना, दमकल की टीम यहां पर मौके पर मौजूद, फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। पानी की बौछार की जा रही है। आग को जी मीडिया संवाददाता मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान, क्या जानकारी मिल रही है इस आग को लेकर के? क्या नियंत्रण कर ली गई है आग? बिल्कुल, देखिए आग को नियंत्रण में करने का जो प्रयास है फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो मौके पर कर रही हैं और आग जो है बेहद भीषण है और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की जो वजह है वो फिलहाल अभी नहीं साफ हो पाई है, लेकिन ये अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट या फिर खाना बनाते समय गैस सिलेंडर लीकेज के चलते ये आग लगी है। अभी फिलहाल आग को मौके पर बुझाने का जो काम है वो जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है और बहुत हद तक
आग को काबू में किया जा चुका है। कुछ अंश जो है आग के वो फिलहाल बाकी है, लेकिन आग जो है वो बेहद विकराल रूप ले चुकी थी। लेकिन फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो मौके पर सूचना के बाद तुरंत पहुंचती हैं और यही वजह है कि आग को विकराल रूप धारण करने से पहले ही काबू में करने की जो कवायद है फायर ब्रिगेड की तरफ से किया जाता है। हालांकि लाखों के जो सामान है टेंट में रखे थे वो जल करके फिलहाल राख हो चुके हैं। हालांकि जो है वो मौके पर है, आग को उस तरीके से कब्जे में काबू में करने की जो कवायद है कोशिश है वो की जा रही है। हालांकि ज्यादातर जो आग है आग के हिस्से को बंद किया जा चुका है। कुछ आग का जो अंश है वो अभी भी फिलहाल चल रहा है और यही वजह है कि फायर ब्रिगेड की टीमें मशक्कत करके उसको बुझाने में जुटी हुई है। और पूरे जो घटनाक्रम है सेक्टर 19 से सेक्टर 16 के बीच का है और ये जो शिविर है यहाँ पर किस तरीके से आग लगी, कैसे लगी, घटनाक्रम हुआ, ये तमाम ऐसी चीजें हैं वो जांच के बाद साफ हो सकेंगी। लेकिन अभी भी फायर ब्रिगेड की टीमें जो है वो मौके पर डटी हुई है और पूरी तरीके से आग को खत्म करने की जो कवायद है वो कर रही है। जी बिल्कुल, आग बुझाने की कवायद की जा रही है। गुफरान, क्या किसी को के हताहत होने की भी कोई खबर आ रही है? कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी कब तक मिलने की उम्मीद है? देखिए, एक विशालकाय पंडाल है और इस विशालकाय पंडाल के पूरे एरिया में आग लगने का मतलब है कि ये नुकसान जो है लाखों में है। हालांकि जो आधिकारिक सूचना है उसकी अगर माने तो अभी कोई हताहत नहीं हुआ, यानी तो कोई चोट नहीं आई है, कोई झुलसा नहीं है। दिन में होने के चलते ये आग जो है जैसे भड़कती है वैसे ही आसपास के जो लोग होते हैं वो अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, यानी उस पंडाल से बाहर निकल आते हैं। लेकिन आग का जो विकराल रूप है, आग का जो धुआं है वो जिस तरीके से पंडाल के भीतर उठता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे आप समझा जा सकता है कि ये नुकसान लाखों में है। और उसके भीतर रखे तमाम, चाहे टेंट के सामान हो, चाहे रहने के लिए गद्दे हो, रजाई हो, बेड हो या तमाम दूसरे जो जरूरी सामान होते हैं वो पूरी तरीके से जल करके राख हो चुके हैं। हालांकि गनीमत ये है कि फायर ब्रिगेड की जो टीम है महज 5 से 7 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच जाती है और यही वजह है कि आग को खत्म करने की जो कोशिश है वो की जाती है। और इसके चलते जो दूसरे पंडाल हैं वो चपेट में फिलहाल नहीं आते, लेकिन हाँ जो ये पंडाल जो आग आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो धुआं की जो लपटें हैं जो दिखाई दे रही हैं, उस जगह को फिलहाल कंट्रोल करने की जो कवायद है, कोशिश है वो फिलहाल जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं उनकी तरफ से की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है राहत बचाव के लिए। तो जो कोशिश है कि आग को विकराल रूप से पहले खत्म किया जाए, ये प्रयास जो है फायर ब्रिगेड की टीमों की तरफ से किया जा रहा है। जी शासन ने बहुत सर उत्तर प्रदेश फायर ब्रिगेड ने बहुत अच्छा काम किया है। 5 मिनट के अंदर पूरे 40 गाड़ियां हैं सब पहुंचकर, और यहाँ से लोकल के लोग, बच्चे जो हम लोग जैसे लोग हैं, हम लोगों ने भी बहुत सफल इस कार्य को बनाया हुआ है। सर सेक्टर 17 में जो है आग लग गई है हमारे, और हम सभी गंगा सेवा दूत इतने मूड में नहीं है कि बता सके कैसे लगी क्या लगी। हम लोग बहुत ही अथक परिश्रम से आग पर काबू पा लिए हैं और आप के माध्यम से जनता जो यहाँ जनता जनार्दन उनका भी सहयोग काफी रहा। कोई किसी प्रकार अब काबू पा लिया गया है और स्थिति नॉर्मल हो गई है। सभी सामान जितने भी सामान थे सब बाहर कर लिए गए हैं। यही पंडाल वगैरह जो है थोड़ा जो बने थे वही जला हुआ, बाकी कोई किसी प्रकार की हमारे सभी गंगा सेवा दूत बहुत ही अथक परिश्रम से आग पर काबू पाए हैं। और मिश्रा प्रयागराज महा। तो यहाँ पर जो वहां चश्मदीद है वो ये बता रहे हैं कि आग को अब काबू कर लिया गया है और किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो वहां शामियाना लगा हुआ था, जो पंडाल लगा हुआ था, वो जल करके खाक हो गया है। हालांकि वहां चश्मदीद ये भी बताते हुए सुनाई पड़े हैं, आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है, कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअल्टी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे प्लीज। सब चीजें कंट्रोल में है, आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है, कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअल्टी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे प्लीज। सब चीजें कंट्रोल में है, आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे प्लीज। सब चीजें कंट्रोल में है, आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है, कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअल्टी नहीं है, सभी चीजें
प्लीज सब चीजें कंट्रोल में है। आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है। कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअल्टी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है कृपया और मोहम्मद गुफरान हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुफरान, यहाँ पर प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है कि कोई इंजरी नहीं हुई है, किसी तरह की कैजुअल्टी नहीं हुई है और अब यहाँ आग काबू में कर ली गई है। ये राहत भरी खबर। हाँ बिल्कुल, देखिए आग जो है वो काबू में है, काबू कर ली गई है, पूरी तरीके से आग को बुझाया जा चुका है। लेकिन और बड़ी खबर आ रही है, प्रयागराज महाकुंभ में फिर से आग लगी है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, सेक्टर यमुनापुरम में आग लगी है। बड़ी खबर आ रही है, प्रयागराज महाकुंभ से फिर से आग लगने की एक घटना प्रयागराज महाकुंभ में हुई है। बड़ी खबर आ रही है, सेक्टर यमुनापुरम में यह आग लगी है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आग बुझाने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। आग लगने की घटना प्रयागराज महाकुंभ में सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपको हम प्रयागराज से दिखा रहे हैं, महाकुंभ में, जहां पर सेक्टर यमुनापुरम में आग लगी है और यहां पर प्रशासन के अधिकारी, दमकल की टीम यहां पहुंचती हुई आग बुझाने की कवायद करती हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से प्रयागराज महाकुंभ में जो फिर से आग लगी है उसको बुझाने की कवायद की जा रही है। बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां महाकुंभ में एक बार फिर से आग लगने की घटना हुई है। यमुनापुरम सेक्टर में ये आग लगी है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रयागराज महाकुंभ में कुछ दिनों पहले भी आग लगने की घटनाएं हुई हैं और एक बार फिर से यहां पर आग लगी है। सेक्टर यमुनापुरम में ये आग लगी है, बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रयागराज महाकुंभ में फिर आग लगने की घटना हुई है। आग से कितना नुकसान हुआ है ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद, दमकल की टीमें आग बुझाने में लगातार लगी हुई हैं। सेक्टर यमुनापुरम में आग लगने की यह घटना हुई है। प्रयागराज महाकुंभ, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इन सबके बीच आग लगने की एक और घटना यमुनापुरम सेक्टर में सामने आई है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। तो प्रयागराज महाकुंभ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सेक्टर यमुनापुरम में आग लगने की ये घटना, दमकल की टीम यहां पर मौके पर मौजूद, फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। पानी की बौछार की जा रही है। आग को जी मीडिया संवाददाता मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान, क्या जानकारी मिल रही है इस आग को लेकर के? क्या नियंत्रण कर ली गई है आग? बिल्कुल, देखिए आग को नियंत्रण में करने का जो प्रयास है फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो मौके पर कर रही हैं और आग जो है बेहद भीषण है और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की जो वजह है वो फिलहाल अभी नहीं साफ हो पाई है। लेकिन ये अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट या फिर खाना बनाते समय गैस सिलेंडर लीकेज के चलते ये आग लगी है। अभी फिलहाल आग को मौके पर बुझाने का जो काम है वो जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है और बहुत हद तक आग को काबू में किया जा चुका है। कुछ अंश जो है आग के वो फिलहाल बाकी है, लेकिन आग जो है वो बेहद विकराल रूप ले चुकी थी। लेकिन फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो मौके पर सूचना के बाद तुरंत पहुंचती हैं और यही वजह है कि आग को विकराल रूप धारण करने से पहले ही काबू में करने की जो कवायद है फायर ब्रिगेड की तरफ से किया जाता है। हालांकि नाके के जो सामान है टेंट में रखे थे वो जल करके फिलहाल राख हो चुकी है। अभी फायर ब्रिगेड जो है वो मौके पर है। आपको उस तरीके से कब्जे में काबू में करने की जो कवायद है, कोशिश है वो की जा रही है। हालांकि ज्यादातर जो आग है, आग के हिस्से को बंद किया जा चुका है। कुछ आग का जो अंश है वो अभी भी फिलहाल चल रहा है और यही वजह है कि फायर ब्रिगेड की टीमें मशक्कत करके उसको बुझाने में जुटी हुई है। और पूरे जो घटनाक्रम है सेक्टर 19 से सेक्टर 16 के बीच का है और ये जो शिविर है यहाँ पर किस तरीके से आग लगी, कैसे लगी, घटनाक्रम हुआ, ये तमाम ऐसी चीजें हैं वो जांच के बाद साफ हो सकेंगी। लेकिन अभी भी फायर ब्रिगेड की टीमें जो है वो मौके पर डटी हुई है और पूरी तरीके से आग को खत्म करने की जो कवायद है वो कर रही है। जी बिल्कुल, आग बुझाने की कवायद की जा रही है। गुफरान, क्या किसी को के हताहत होने की भी कोई खबर आ रही है? कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी कब तक मिलने की उम्मीद है? देखिए, एक विशालकाय पंडाल है और इस विशालकाय पंडाल के पूरे एरिया में आग लगने का मतलब है कि ये नुकसान जो है लाखों में है। हालांकि जो आधिकारिक सूचना है उसकी अगर माने तो अभी कोई हताहत नहीं हुआ, यानी किसी को कोई चोट नहीं आई है, कोई झुलसा नहीं है।
दिन में होने के चलते ये आग जो है तहस भड़कती है। वैसे ही आसपास के जो लोग होते हैं वो अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, यानी उस पंडाल से बाहर निकल आते हैं। लेकिन आग का जो विकराल रूप है, आग का जो धुआं है, वो जिस तरीके से पंडाल के भीतर उठता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे आप समझा जा सकता है कि ये नुकसान लाखों में है। और उसके भीतर रखे तमाम, चाहे टेंट के सामान हो, चाहे रहने के लिए गद्दे हो, रजाई हो, बेड हो, या तमाम दूसरे जो जरूरी सामान होते हैं, वो पूरी तरीके से जल करके राख हो चुके हैं। हालांकि गनीमत ये है कि फायर ब्रिगेड की जो टीम है महज 5 से 7 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच जाती है, और यही वजह है कि आग को खत्म करने की जो कोशिश है वो की जाती है। और इसकी चलते जो दूसरे पंडाल हैं वो चपेट में फिलहाल नहीं आते, लेकिन हाँ, जो ये पंडाल, जो आग आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो धुआं की जो लपटें हैं जो दिखाई दे रही हैं, उस जगह को फिलहाल कंट्रोल करने की जो कवायद है, कोशिश है, वो फिलहाल जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं उनकी तरफ से की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है राहत बचाव के लिए। तो जो कोशिश है कि आग को विकराल रूप से पहले खत्म किया जाए। Thank you, Speaker Sir, for allowing me to speak on the President's address. Camera. Thank you. Double thank you, sir. I heard the President's address. I sat there with Kharge ji and I listened to it. And I must say, I struggled through the President's address to maintain my attention on what was being said, because I had heard pretty much the same President's address the last time and the time before that and the time before that. And it was the same laundry list of things that the government has done. We have done this, we have done this, we have done this, 50 or 100 things that the government has done. And so while I was sitting there, I was thinking, okay, I am being critical about what is being said. And I am saying that this is not the type of President's address that should be delivered. Well, the question came to my mind, what type of address would an India Gathbandhan government deliver? How would that address be different than the address we heard? Because it's no point me saying that it is a laundry list and then not providing an alternative idea. And so today I would like to lay out some dimensions of what an alternative address would look like, what the India Gathbandhan would probably focus on, and where we would lay emphasis. The future of this country is going to be decided by the young men and women of this country, the youth of this country. So I think anything we say has to be addressed to them, has to be spoken to them. The first thing in front of us, and this is something I'm sure the Prime Minister would accept and pretty much everybody in this room will accept, is that even though we have grown fast, we are growing slightly slower now, but we are still growing. A universal problem that we have faced is that we have not been able to tackle the problem of unemployment. No, neither the UPA government nor today's NDA government has given a clear-cut answer to the youth of India about employment. I don't think anybody in this room will disagree with me. I'll give a little statistic for the Prime Minister. The Prime Minister
something I would agree with directionally. The Prime Minister proposed the Make in India program. I think a good idea. We saw the statues, we saw the functions, we saw the so-called investment, and the result is right in front of me. Manufacturing fell from 15.3% of GDP in 2014 to 12.6% of GDP today. That is the lowest share of manufacturing in 60 years. I'm not even blaming the Prime Minister, because I think it would not be fair to say he didn't try. I could say that the Prime Minister tried, and I think conceptually Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed, because manufacturing went from 15.3% of GDP to 12.6%. So the first question that any alternative vision would answer to the youngsters of our country is, okay, what and how are we going to solve this problem of employment? Any country basically organizes two things. You can organize consumption, and then you can organize production. Modern way of saying organizing consumption is services. Modern way of saying organizing production is manufacturing. But there is more to production than simply manufacturing. For example, agriculture also is about production. Now, pretty much every government since 1990 has done a decent job on consumption, on organizing consumption. Which are the companies that organize consumption? Uber organizes consumption. Reliance organizes consumption. Adani organizes consumption. But we have, as a country, failed in organizing production. We have excellent companies that try to organize production. They are the Mahindras of this world. They are the Bajajs of this world. Part of Tata's organizes production, but the record of the country on organizing production is dismal. And essentially what we have done is we have handed over the organization of production to the Chinese. So this mobile phone, even though we are saying we make this mobile phone in India, that is not a fact. This phone is not made in India. This phone is assembled in India. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. So every time we use a phone, every time we wear a Chinese shirt, a Bangladeshi shirt, every time we wear a pair of Chinese sneakers, we are paying a tax to China. Because some Chinese youngster is earning a salary to make or to produce that product. So the first message I would give in a presidential address would be that India has to focus completely on production. Because if we do not focus on production and we continue to focus only on consumption, we will find that we will run huge deficits, we will increase inequality, and eventually we will run into a serious problem. Social problem because of unemployment, which we are already facing. If you look at the numbers of the amount of people who are in jail, if you look at the numbers that are spent on internal security, if you look at the numbers spent on our police forces, they're all spiraling. They're all rising. And everybody understands that social tension is on the rise in India. So now the next question comes, okay, so where is this employment going to come from? What is India going to produce? And for that, I'd like to tell all the youngsters of this country that there is a revolution taking place, an exciting revolution. The world is transforming completely. And the change that is taking place, at the heart of the change that is taking place, we are moving from the world of the internal combustion engine
to the world of the electric motor. We are moving from petrol to batteries. We are moving wind, solar, potentially nuclear energy. So our entire way of moving is changing. And this is going to change every single thing. It is going to change warfare. It is going to change medical treatment. It is going to change education. It is going to change how we eat. It is going to change every single thing. Now, the last time there was a revolution called the computer revolution, the government of India had a clear focus. We looked at that revolution. It was the Congress government. We looked at the revolution and we decided clearly that we are going to focus on the development of software. And we rode the wave of that revolution. And today you can see the result. I remember people laughing. I remember people laughing when the computer was being talked about. You mentioned Mr. Vajpayee. I respect Mr. Vajpayee, but Mr. Vajpayee gave a speech saying that computers are of no consequence to India. So, what is important when there is a revolution? What is important is that you understand what are the drivers of that revolution and where exactly do you need to focus, where exactly do you need to sit in that revolution. I said that this revolution is going to change everything. And I want the youngsters in this country to think about it. There is a war going on in Ukraine. The war in Ukraine is actually a war between the internal combustion engine and the motor, the electric motor. The electric motor is inside the drone, the engine is inside the tank. And if you look at what is going on in Ukraine, the tanks are dying by the thousands. And small little drones with electric motors, small batteries, not much bigger than that, are destroying the entire tank artillery infrastructure of both Ukraine and Russia. So the drone is the electric motor. The drone is the battery. The drone also needs to see. So the drone is a camera. In the same way, electric cars, the electric car is a motor. The electric car is batteries. The electric car is cameras. Robots are exactly the same thing. Robots are electric motors, multiple electric motors with cameras, with batteries. And this is what the revolution is going to look like. So there are basically 4 technologies that are driving this entire change in mobility. Electric motors, batteries, optics, and then on top of that, you can apply AI. Now I want to tell the youngsters of this country, people talk about AI. But it's important to understand that AI on its own is absolutely meaningless. Because AI operates on top of data. Without data, AI means nothing. And if we look at data today, there is one thing which is very clear. Every single piece of data that comes out of the production system in the world, the data that was used to make this phone, the data that is used to make electric cars, the data that is used to make basically all electronics on the planet today is owned by China. And the consumption data is owned by the United States. In China, the consumption data is owned by China. But in India, companies like Google, companies like Facebook, companies like Instagram, X, they own our consumption data. So if India wants to talk about AI, it has to first answer the question, what data is going to power that AI? And the answer today is India does not have that data. Neither does India have production data, neither does India have consumption data. We have handed our consumption data to the big American companies, and the production data we don't have anyway. So what would that vision look like? The first thing, we would start getting youngsters excited about this revolution. We would start to introduce the idea of a completely new way of moving, a completely
a complete revolution in how things move. We would start teaching our children in schools about batteries, about electric motors, about how these things combine, about how drones, robots, electric cars are structured, how they will work together. And most important, we have to start building a production network so that we can get access to production data. Now, what would we focus on? We would not give you a laundry list. China has at least a 10-year lead on India in this space. China has been working on batteries, robots, motors, optics for the last 10 years, and we are behind. So what would our president's address say to the youngsters? We will choose critical areas in each one of these technologies, and we will start to build capabilities in those areas. The second thing we would do, we would ensure that our banking system is not captured by 2 or 3 companies that basically do not allow you to build a production system. But our banking system is open, is dynamic, and is accessible to small and medium businesses and to millions and millions of entrepreneurs who want to take part in this revolution. Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. So it is important to understand where So I'm sorry that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. It's okay. I've apologized. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. So we would start by telling our young men and women that they have to be at the forefront of this revolution. We cannot afford that the Chinese are at the forefront of this revolution. Number 1. Number 2, we would ensure that the absolute best experts on these technologies would talk to our students, would talk to our youngsters, and guide them on what a future, on what these future technologies are going to do. We would make them partners in this revolution. Now, we talk about defense. And today, we have the Chinese. And the Prime Minister has denied it. And the army has contradicted the Prime Minister. It's true. The Prime Minister has denied it. The Prime Minister has denied it. And the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. The Prime Minister has denied that Chinese forces are inside our territory, but for some reason, our army keeps talking to the Chinese about their entry into our territory, and our Chief of Army Staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. This is not invention, this is a fact. Now, but the reason China is inside our territory is important. Because people think that wars are fought between armies and their weapons. But the fact of the matter is that wars are fought by industrial systems. The fact of the matter is that China has an industrial system that is far stronger, far bigger than our industrial system. And that is why they have the guts to come inside this country.
The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. The reason China is sitting inside this country is because India is refusing to produce. And I am worried that India is going to give up this revolution to the Chinese once again. The reason I made this reference is because everything is connected. If and when we fight a war with China, we will be fighting with Chinese electric motors, Chinese batteries, Chinese optics, and we will be buying Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries. It is a non-sustainable proposition. That is why for our security, for the future of our children, for the future of our country, we have to build a production system, and we cannot allow this revolution to go by. Now, the next step, we have a strategic partner called the United States. The partnership should focus on how India and the United States can work together to take advantage of this revolution. That is what the conversation should be on. Please understand that India is as important as the United States. Comments on the budget, I would like to address to a basic question that India, as per our constitution, is a union of states, and the budget itself and the entire budgetary process is not federal in nature, it is unitary in nature, and the states have neither been consulted exhaustively, not allowed to participate in the budget making process. So that this is anti-federal, this is against the spirit of federalism and spirit of the constitution. So here I want to say that India, our country, is not India that carved out states out of it like Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu or Bengal. Instead, it is the states which submerged their identities and made this country. So in the budget making process, this entire concept of a federal structure is being mitigated, is being destroyed, and not being taken into consideration, and the budget is unitary in nature. You are homogenizing the country. Every state had its own problems, own specificities, own particularities in education, in health, even disease patterns different in many states. It has own needs and priorities. They are never taken into consideration, they are never consulted. So budget is made while sitting in the rooms, and the states are not exhaustively consulted in making this budget. This is my first contention on this budget, stating thereby that it is unitary in nature and not federal, number one. And secondly, sir, this budget is not just question of data here and there, some promises here and there. It's about the nature, how the present government is going to mobilize, is going to use our resources to benefit the people of India, to benefit the entire population. And again, going back to the federal character, I say that where the entire GDP is produced, it's the states. Where the entire resources of the country located, it's the states. Where entire wealth generation takes place, it's the states again.